તો એના લોક પનીર પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે। અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ ઉત્પાદકો અને વિક્રેતાઓને ત્યાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું। નરોડા પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલી ફેક્ટરીમાં ફૂડ વિભાગે ચેકિંગ હાથ ધર્યું છે। એના લોક પનીરનું ઉત્પાદન અટકાવવા માટે તંત્રની કાર્યવાહી। મીરા ડેરી પ્રોડક્ટ ફેક્ટરીમાં ફૂડ વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઈ। राज्य सरकारे जे प्रकारे एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे त्यारबाद हवे कॉर्पोरेशनना फूड विभाग द्वारा ठेर ठेर जे चेकिंग छे ते हाथ धरवामां आव्युं छे। महत्वनुं छे के कोई प्रकारनी पनीरमां मिलावट छे के नहीं ते अंगे अहींया जे तपास छे ते तपास करवामां आवी रही छे। सरकारश्रीना प्रतिबंधना अनुसंधाने आज चेकिंग में आया राजेश दूधघरमा नरोड़ा विस्तार कुबेरनगरमा अहींया पनीरनुं बी सेम्पल लीधुं छे। पछी शंकास्पद अमने बटर माखण जे बी मळ्युं छे सेम्पलिंग लईने पृथक्करण अर्थे लेबोरेटरी मोकलवामां आवशे। सर क्या क्या चेकिंग करवामां आव्युं छे कॉर्पोरेशने? कॉर्पोरेशननी अलग अलग जोन में अलग अलग टीमों आज निकली है। अमारी उत्तर जोननी टीम है जो उत्तर जोननी टीम में अमे कुबेरनगर वोर्ड में आज अहींया चेकिंग में आया छे अने सेम्पलो लईने लेबोरेटरी में मोकलशे। अंगे तमाम जे तपास छे ते तपास शरू करवामां आवशे। कैमरामेन विजय साथे मानसी पटेल, गुजरात फर्स्ट, अमदावाद। तो अमदावाद में एना लोक पनीर प्रतिबंध बाद चेकिंग शुरू करवामां आव्युं छे। एमसी फूड विभाग द्वारा अलग विस्तारों में चेकिंग हाथ धरायुं छे। पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम जोन में तपास शुरू थई छे। वेजलपुर विस्तार में आवेली विजय डेरी में आज चेकिंग हाथ धरायुं छे। विजय डेरीना पनीरनुं फूड सेम्पल लेवामां आव्युं छे। डेरी में चोखाई न होवाथी नोटिस फटकाराई। देशनी अंदर तीजू राज्य गुजरात बन्युं छे के जेने एनालॉग पनीर छे तेना उपर प्रतिबंध मूक्यो छे। जेवो ज राज्य सरकारे परिपत्र जाहेर कर्यो छे तेने लईने जिल्लामां साथे ज राज्यनी अंदर अनेक शहेरोनी अंदर महानगरपालिकाओ थकी जे पण पनीर बनावती फैक्टरीओ छे त्यां चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं छे। एमांनी ज एक फैक्टरीमां आपणे हाजर छीए के ज्यां आगळ कॉर्पोरेशन थकी पनीर जे बनावटी कंपनीओ छे त्यां आगळ एमना कोल्ड स्टोरेजमां जई अने पनीरनी गुणवत्ता अने साथे ज कई रीते एनी बनावट छे तेनी तपास छे ए करवामां आवी रही छे। आप जोई शकाय छे के जे रीते पनीर बनावती जे फैक्टरी छे एनी अंदर पड़ेला ड्रम होय के पछी पेकेजिंग करेली जे वस्तुओ तमामना सेम्पल लेवा अने कलेक्ट करवानुं काम अने साथे साथे आ पनीर केवी रीते बनाववामां आवे छे तेनी जाळवणी केवी रीते करवामां आवे छे ने ए जे जग्याए छे एनी स्वच्छताने लई तमाम पासाओ जे नॉर्म्स छे ए नॉर्म्सना आधारे अहींया पनीर बने छे के केम तेनी तपास छे ए हाथ धरवामां आवी छे। कॉर्पोरेशनना अधिकारी आपणी साथे छे फूड विभागना तेमनी साथे वात करीए। एक परिपत्र अने त्यारबाद कॉर्पोरेशन छे अलग अलग विस्तारोमां अलग अलग झोनमा जई अने चेकिंग करी रह्युं छे। अत्यारे कया विस्तारमां चेकिंग शुं तपासमां सामे आव्युं छे अने आ कई जग्याएनुं चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं? हालमां गुजरात सरकार श्री द्वारा पनीर एनालॉग पर प्रतिबंध मूकवामां आवेल छे। जेना अनुसंधानमां अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननी फूड विभागनी अलग अलग टीमों द्वारा अमदावाद शहेरनी अंदर पनीर बनावता अथवा पनीर एनालॉग बनावता युनिटो सामे कड़क में कड़क चेकिंग हाथ धराई रही है। हाल में अत्यारे आपणे वेजलपुर विस्तार में आवेल विजय डेरी में तपास हाथ धराई रही है। जेमां तेओ द्वारा मिल्क में पनीर बनावे छे अने एनुं पेकिंग करीने वेचता मालूम पड़ेल छे। जेना नमूनाओ लई अने लेबोरेटरी में तपास अर्थे मोकली आपवामां आवे छे। संक्षिप्त में टूंक में समझवुं छे के एनालॉग पनीर ने मानो के ओळखवुं छे अथवा तो कई रीते बने छे तो कई रीते ओळखी शकाय? पनीर एनालॉग वेजिटेबल ऑइल में बने छे। અમે જેની હાર્ડનેસ વધારે હોય છે જ્યારે મિલ્કમાંથી જે પનીર બનાવવામાં આવે છે એ સોફ્ટ હોય છે। આપણે આમ દબાવીએ એટલે પોચું હોય છે, જ્યારે પેલામાં થોડું હાર્ડનેસ જણાઈ આવે છે એટલે આપણને તરત જ એનો ડિફરન્સ ખ્યાલ આવી જાય છે। લોકોએ શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ જ્યારે આવું પનીર ખરીદતા હોય છે અને કેટલું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે? હાલમાં જે લોકો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા છેલ્લા 6 મહિનાથી આના અંગેની રેડ કરી અને પનીર એનાલોગ બનાવતા યુનિટો અહીંયા બંધ કરાવી દીધેલ છે। હાલમાં જો કોઈ ખૂણે ખાંતરે આપણને જો મળી આવશે તો તેઓની સામે કાયદાકીય કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરી તેઓને સજા આપવાની કામગીરી કરાવીશું। શહેરના અલગ અલગ ઝોનમાં અલગ અલગ ટીમ થકી ફૂડ વિભાગ છે તે ચેકિંગ કરી રહી છે। આ વિજય ડેરી છે કે જે દૂધમાંથી પનીર બનાવે છે અને એને એ જગ્યા ઉપર કોર્પોરેશનની જે ટીમ છે તે પહોંચી છે અને પનીર જે બનાવવામાં આવે છે એને કેવી રીતે રાખવામાં આવે છે આ દ્રશ્ય છે જોઈ શકો છો। અને આ રીતે પનીર બનાવવામાં આવે છે। જો કે આ વિજય ડેરી છે તેનું પનીર એનું સેમ્પલ છે એ કોર્પોરેશનના ફૂડ વિભાગ થકી લેવામાં આવ્યું છે। સેમ્પલના તપાસ બાદ એકચ્યુઅલ ખબર પડશે કે આ જે ફેક્ટરી છે એ ફેક્ટરીમાં બનતું પનીર ખાદ્ય લાયક છે કે પછી અખાદ્ય છે। કેમેરા પર્સન મનીષ ત્રિવેદી સાથે ઉમંગ રાવલ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।